Okay, beta, let's continue our presentation. Yes, sir. The recording is on now. Yes. So beta, this was the last thing what we did to find out whether the vertex lies inside the PAB triangle or outside. हमने check किया angle A and angle B. If both the angles are acute angles, means less than 90, the vertex lies inside the triangle. If any one of those two angles is obtuse angle, that is greater than 90, the vertex lies outside and on the side of the obtuse angle. So up to here, any doubt in the mind, beta? Sir, if any one of the greater, no? If any one of the greater, then it will come to that side and outside. If any one of them is greater than 90. Okay, okay. Okay, sir. Okay, Clear, clear. you have to compare them with 90 degrees, beta. That decides whether it is a acute angle or a obtuse angle. Okay, sir. Okay. So let's continue now. What we are going to see now is the Napier's rules, how to apply the Napier rule, because you see we have a 90-degree angle in our triangle. So these 90-degree angle triangles are called as special spherical triangles. I need a lot of sunshine. Bharat beta, nice music, but you can put the mic off. Okay, so we are now going to see how do we apply the Napier rule to a special spherical triangle. Special basically means if it has got a 90-degree side or 90-degree angle. Any part of the triangle is 90 degrees, it becomes a special spherical triangle, and that special spherical triangle can be solved using the Napier's rules. So we are going to see how do we apply the Napier rule to a right angled triangle, and we'll also see how do we apply it to a right sided triangle. So let's continue now. To avoid any difficulty in understanding of the topic at hand, let's quickly revise the application of Napier's rule to right-angled spherical triangles. To be able to apply Napier's rule, we first draw the triangle. So here is the triangle, point A, point B, point C, all joined by their arcs of great circles. So we have a spherical triangle ABC, which has come up on the screen. Then we identify the angle, which is 90 degrees. Let us say angle B in our case is 90 degrees. So we get ABC as the right angled spherical triangle, which has 6 parts, 3 angles, 3 sides, with angle B being 90 degrees. Now we make the Napier's cartwheel. Now to make the Napier's cartwheel, we draw the circle. We divide into 4 parts. The upper one here is divided into 2 through an. So beta, for application of the Napier rule, we are applying it to a 90-degree triangle, a right angle triangle. First of all, we have to make this circular diagram. In this circular diagram, there are total 5 parts. So 2 small parts which you see on top and 3 big parts at the bottom.
So total 5 parts in this particular circular diagram. Now we are going to fill up these parts. Narrow. The circle is now divided into 5 parts. Here we put down the part which is 90 degrees. So angle B 90 degree comes here. Now we have 5 parts left here in the spherical triangle, and we have 5 parts in the cartwheel. They are all filled in. Now these bigger parts here have the complements of the parts, whereas the smaller ones shall have the parts coming in as it is. What does it mean? We can fill in 90 minus 90 minus 90 minus here. That means here we shall have the complement of the parts. Now from B we can start going clockwise and fill up these parts in the clockwise direction from here like this. So when we go from B to clockwise, we have side BC. Side BC comes here. Then we have angle C. Angle C comes here. Then we have side AC, which comes here. Then we have side angle A, which comes here. And lastly, we have side AB, which shows up here. And that's how this is the cartwheel, which is now completed for the right-angled spherical triangle. So बेटा याद आ गया कैसे fill up करते थे इसको? Any doubt in this? Yes, sir. याद आ गया sir. Okay. Any doubt बेटा? साइड्स और एंगल्स कैसे चूज करने का, और वो वाला बता दीजिए सर. मतलब वो बी तो ले लिया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और Right. यहाँ पे उसके एडजेसेंट साइड्स हो जाते हैं सर, ए बी और बी सी जो इंक्लूडेड होता है. कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना आपने. फॉरगेट अबाउट द साइड एंगल इंक्लूडेड, सब भूल जाओ, कुछ नहीं करना. ओके सर. बहुत सिंपल है बेटा. जो भी 90 डिग्री वाला पार्ट है इसमें, लाइक हमारी ट्रायंगल में एंगल बी है 90 डिग्री, उसे यहाँ लिख दो ऊपर. आपने लिख दिया b इक्वल टू 90. अब जो ये ट्रायंगल है इसमें क्लॉकवाइज चलना शुरू करो. जब बेटा आप एंगल बी से क्लॉकवाइज चलोगे तो ट्रायंगल का अगला पार्ट कौन सा आएगा? Side BC. वेरी गुड. सो व्हेन यू गो क्लॉकवाइज मींस लाइक दिस, तो एंगल बी के बाद अगला पार्ट आएगा साइड बी सी. अब आपने यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देना है लाइक दिस. सो क्लॉकवाइज पहला पार्ट आया बी सी, हमने इसे यहाँ पे फिल कर दिया. अब अगर आप बी सी के बाद और आगे जाओगे क्लॉकवाइज तो अगला पार्ट क्या आएगा? एंगल सी सर. एंगल सी. तो हम यहाँ भी आगे गए और हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया एंगल सी. 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस तो हमने पहले ही लिख दिया था. सो अब हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया एंगल सी. और आगे गए तो आया ए सी, हमने यहाँ पे फिल कर दिया ए सी. और आगे गए तो आया एंगल ए, हम भी आगे गए और हमने यहाँ फिलअप कर दिया एंगल ए, एंड सो ऑन. Is it clear now, beta? Yes, sir. So if we go anti-clockwise, will it make any difference in the answers? हाँ बेटा, if you want, you can go anti-clockwise also if you prefer. Napier rule will still be correctly applied. Okay. और बताओ बेटा, और कोई डाउट है अभी माइंड में? So you can take a screenshot of this beta if you want. आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि हमने नेपियर रूल कैसे अप्लाई करना है if there is a confusion in the mind. ठीक है सर. Okay, let's proceed ahead now. अभी हमने सिर्फ पार्ट्स को फिल अप किया है. So once this circular diagram is filled up, then we are ready to apply the formula. अब हम देखेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है. Let's see. Now, if you have learned to complete the cartwheel in a different manner, it's perfectly fine. You can continue with that practice as long as the cartwheel is correctly filled in.
Having completed the cartwheel, we can apply the Napier's rule. The rules are sine of the middle part is equal to product of the tangent of the adjacent parts. So this is one of the two rules. The other one being sine of the middle part is equal to product of the cosine of the opposite parts. So this is the other one. Depending on the combination, we can choose the rule to apply, use the given two parts and calculate the third one. Of course, the parts involved have to be the ones other than the 90-degree angle. Okay, so beta, these are the two formula which are applied in Napier rule. So you can either take a screenshot or you can note them down in your notebook. Sine of the middle part is equal to tangent adjacent part 1 multiplied by tangent adjacent part 2. This is the first formula. The second one is sine of the middle part is equal to cos of opposite part 1 multiplied by cos of opposite part 2. I'll tell you what do we mean by these middle part, adjacent part and opposite part. I'll explain it to you. So note down or take a screenshot and save this. Okay. Okay, beta. Okay. Now, beta, we have filled up the circular diagram, also known as cartwheel. We know the formula now. These formula also can be easily remembered. Left hand side में तो दोनों formula के sign of middle part ही आता है. So there is no confusion. Right side में बेटा tangent and adjacent. ये दोनों rhyming words हैं. So you remember tangent, adjacent, they will always go together. And cos और opposite इन दोनों में O की sound है. So cos and opposite जिनमें दोनों में O की sound है, they go together. So you can remember it by this method and you will never forget it again. Tangent, adjacent, cos, opposite. So once the circular diagram cartwheel is filled up, you know these formula, then using the Napier rule, you can find out anything in this triangle. What should be given to you is, listen carefully, other than the 90-degree part, any two items of the triangle should be given to you. Means अगर 90 डिग्री वाले पार्ट को हम छोड़ दें, उसे छोड़कर कोई भी दो चीजें इस ट्राइंगल में अगर हमें पता हो, any two things, it could be two sides, it could be two angles, it could be one side or one angle. अगर हमें इनमें से कुछ भी पता है तो हम नेपियर रूल से बाकी की सारी चीजों को ढूंढ सकते हैं. We can find out anything else in the triangle. So is this clear, beta? Yes, sir. Okay, very good. So you should know how to fill up the circular diagram or the cartwheel. You should know these two formulas, tangent adjacent, cos opposite, and you should know कि 90 डिग्री वाले पार्ट को छोड़ के कोई भी दो चीजें अगर हमें पता चल जाएं तो हम नेपियर रूल अप्लाई करके कुछ भी और ढूंढ सकते हैं. So let us see further now. And hereafter, we can apply the Napier's One side angle also. Ask again, beta. कोई भी दो चीज means it can be one side and one angle as well. Yes, beta. कोई भी दो चीजें other than the 90 degree part. Okay. Okay. rule and complete our calculations. Now we
Okay, so before we go into the question, let me explain it to you. How do we pick up the middle part and the adjacent part? बेटा आप इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में लेट मी टेक इट टू द पीडीएफ, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा. Okay beta, so you see a PAB triangle here, and in this angle B is 90 degrees. और नीचे आप देखो मैंने जो ये सर्कुलर डायग्राम है या जो कार्ट व्हील है उसे फिल कर दिया है. All the parts are filled up. From B, if you go clockwise, so पहली side आती है AB. You see AB is filled up here. Next thing is angle A. Angle A is filled up. Next is PA. PA is filled up. Angle P and PP. So beta, this filling up is okay. Everybody comfortable? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Very good. अब बेटा मैंने आपको बताया है, if we know any two parts of the triangle other than the 90 degree part, using Napier's rule we can find any other part of the triangle. So this is the use of Napier rule. Now let us assume कि हमें जो ये ट्राइंगल PAB है इसमें दो चीज़ें पता हैं. कौन सी दो चीज़ें पता हैं? वन इज साइड PA, it is known to us. Other is angle P, it is known to us. ये दो चीज़ें हमें पता हैं एंड हमें एंगल A को फाइंड आउट करना है. वी वांट टू नो व्हाट इज एंगल A. लेट अस सी हाउ डू वी डू इट. सबसे पहले तो लेट अस आइडेंटिफाई द पार्ट्स विच आर नोन टू अस. One thing which is known is side Papa alpha. I have made a tick mark here. And second thing which we know is angle P. Again I have made a green color tick mark here. और जो चीज़ को हमने ढूंढना है that is angle A. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क जो है वो ड्रॉ कर दिया है. अब ये तीनों चीज़ों को let us identify them in the circular diagram. In the cartwheel, let's identify them. So if you see, जो पहली चीज़ हमें पता थी that is side PA Papa alpha, that is this part of the cartwheel. I put a tick mark here कि हमें ये चीज़ पता है. दूसरी चीज़ जो हमें पता थी that is angle P. If you see, it is this part of the cartwheel diagram. यहाँ भी मैंने टिक मार्क जो है वो अप्लाई कर दिया है, indicating that this is known to us. Now let's mark the unknown item. Unknown item जो है बेटा वो है A. So it is in this part. So तीनों के तीनों पार्ट अब हमारी सर्कुलर डायग्राम में या कार्ट व्हील में आइडेंटिफाई हो गए हैं. अब बेटा इन तीनों में से कैन यू टेल मी विच विल बी द मिडिल पार्ट? 90 minus PA. वेरी गुड. 90 minus 3. राइट, ये बनेगा हमारा मिडिल पार्ट. और बाकी के दोनों पार्ट क्या बनेंगे बेटा? विल दे बी एडजेसेंट और ऑपोजिट? Adjacent Adjacent. Adjacent, sir. part.
Very good, beta. So since these are joined together with our middle part, 90 minus PA के साथ दोनों part join हो रहे हैं. They are sharing their boundary. So इन दोनों को हम लोग बोलते हैं adjacent part. Opposite part कौन से होते? अगर हमें पापा ब्रेवो या अल्फा ब्रेवो साइड या पार्ट को ढूंढना होता, they will be opposite part to 90 minus PA. Okay, so anyway, यहाँ के लिए हमारे पास middle part है और adjacent part है. So let's apply the formula now. We will apply the adjacent part formula, which will be sine of 90 minus PA, that is the middle part, equal to tangent adjacent 1, which is 90 minus P, into tangent adjacent part 2, which is 90 minus A. In this equation now, we know what is PA, it is known to us. We know what is angle P, it is known to us. The only unknown here is A. So we put these two values and we find out what is angle A. This is how we apply the Napier's rule. So अब अगर कोई doubt है बेटा तो बताओ. Nice. Okay, very good beta. Now let me show you the Napier rule for a 90-degree side also beta. This was for 90-degree angle. Huh? So though it is not required here, but later on questions में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. So 90-degree side के लिए Napier rule को कैसे apply करना है? Let's see. Now you see beta, we have the PAB triangle on the screen. And one side of this triangle is 90-degree side. A 90-degree side is represented by this kind of rectangle made on the side. So अगर आपको ऐसा कोई box दिखाई दे किसी भी spherical triangle पे, so this is not a misprint. This is indicating that ये जो side है, ये 90-degree की side है. So we have a 90-degree side, PAB triangle. How do we apply the Napier rule? We first make the circular diagram. Circular diagram में हम वैसे ही 5 parts बनाएंगे. So you can see there are total 5 parts. Exactly similar to what we did earlier. 2 छोटे part हैं ऊपर, 3 बड़े part हैं नीचे. And इसमें अब हम लास्ट के जो बड़े वाले तीनों पार्ट्स थे, बॉटम वाले जो तीनों पार्ट्स थे, उसमें हमने 90 माइनस की वैल्यू को फिलअप किया था. द डिफरेंस हियर इज कि जो सबसे बॉटम वाला पार्ट है, दिस वन, इसमें हम 90 डिग्री को पीछे ले जाते हैं. मीन्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग 90 माइनस, वी राइट माइनस 90. जो भी ट्रायंगल का पार्ट होगा वो यहाँ आगे आएगा. That is the only difference. बाकी सारी की सारी एप्लीकेशन बिल्कुल सेम है बेटा. So let's now apply the other things also. बाकी के दोनों पार्ट्स में हम लोग 90 माइनस और 90 माइनस फिलअप कर देंगे as usual, जैसा हमने पहले किया था. जो भी हमारा 90 डिग्री वाला पार्ट है ट्रायंगल में, उसे हम यहाँ ऊपर रखेंगे. इस केस में साइड AB is 90 degrees, so you will keep side AB on top. Now you can move clockwise or anti-clockwise as you like. So can you tell me AB के बाद next क्या आएगा बेटा? Going clockwise? Angle A. Angle A. Angle A, sir. Very good. So you will have angle A. So going clockwise from here, हमने यहाँ पे angle A fill up कर दिया है. Then the next one is side PA. 90 minus PA. Very good. Should be Then the next part. angle P. Angle Very- P minus 90. P minus 90. So it will be P minus 90. Very good. Next, 90 minus Side CB. PB. very good.
and the last one Bravo. is Angle P. bra. Angle B. Angle P. So हमारे सारे parts जो हैं वो fill up हो गए हैं. The circular diagram cartwheel is filled up. जो formula है they remain the same बेटा. Sine of middle part is equal to tangent adjacent part 1 multiplied by tangent adjacent part 2. Sine of middle part is equal to cos opposite 1 multiplied by cos opposite part 2. Formula remains the same. And इसमें भी बिल्कुल वही condition है. If you know any two parts of the triangle other than the 90-degree part, you can find out anything else. So is it clear now, beta? Any doubt to anybody's mind? Okay. So shall we proceed ahead now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. We have understood the Napier's rule. So let's try to apply it and see how can we use these rules to find the position of the vertex. Now we reinforce our learning through an example wherein we need to calculate the coordinates of the vertex. Okay, so बेटा अब पहले तो एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं. You see this question on the screen. इसमें हमारे पास दो पोजीशंस हैं, A and B. Now we have to first find out the great circle distance between them, and we need to find out angle A and angle B. ये तीन चीजें हमने find out करनी है. So get your notebooks and calculators, and I hope you should be able to do it in 15 minutes. 15 Yes, minutes. sir. Okay. So beta, I give you time till 1:30. It's 1:15 now. So give me the great circle distance and initial and final courses. Or you can give me angle A and angle B. No need to find the courses. Just give me angle A and angle B and the great circle distance. So we'll connect back at 1:30 beta. Okay, 1:30 you should come back. Don't log out, stay there and keep doing the question. Okay, sir. Beta, please take a screenshot of this, or you can write the positions. I'll remove the screen then.
यहाँ पे किसी का आंसर आया? हाँ डिस्टेंस आया था यार 3547.1। सेम हियर आल्सो। क्या 3548.8 आ रहा है? 3547.1 आया है मेरा यार। पी की वैल्यू क्या आ रही है? 3547.3 आया है। और क्या निकालना है इसमें? एंगल ए और एंगल बी निकालना है ना? 59.14। इनिशियल एंड फाइनल कोर्स। स्मॉल पी की वैल्यू क्या आ रही है उसमें? किसकी वैल्यू? एंगल पी की, एंगल स्मॉल पी मतलब वो लेंथ, मतलब मल्टीप्लाई करने से पहले 59.14। 59.12 आया हुआ है। भाई कोर्स कितना है? 60 आया ना, एक 60 डिग्री इनिशियल कोर्स 54.8। आया 60 54.6 और फाइनल है 83 33.5 35.5। मेरा तो 60 समथिंग। इनिशियल आ रहा है 60.916, फाइनल आ रहा है 96.395 396। हाँ इतना ही आ रहा है। 96 तो एंगल बी है ना, फाइनल कोर्स तो अलग है। फाइनल कोर्स विल बी 180 माइनस बी रहेगा ना वो तो। हाँ 180 माइनस बी, वो बी की वैल्यू ठीक है 96.4। इसके बाद भी कुछ निकालने का है इसमें, फाइनल कोर्स और इनिशियल कोर्स के बाद? फाइनल कोर्स 83 डिग्रीज आ रहा है। हाँ हाँ 83 राइट, 60। ओके ठीक।
So beta got the answer, distances and angle A and angle B. हाँ सर वो तो आ गया सर. Okay, ठीक है बेटा, let's see. आ गए सर. Of a great circle track between position A, 10 degrees north, 40 degrees east, and position B, 30 degrees north, 100 degrees east. Now this question for the GC distance, initial and final course, has already been solved in our video 1. So the PAB triangle, the formation of the PAB triangle and calculation of angle A and B has been done therein. So we'll pick up the values of A and B from there. But before that, let's make the diagram for this case. We have the pole, we have position A, we have position B, meridians of A and B connected by the GC track from A to B. We have PA has colat of A, PB has colat of B, and angle P as the D long between A and B. Now, relevant results of solution to this PAB triangle from video 1 are angle A 60 degrees 54.8 minutes and angle B 96 degrees 24.6 minutes. Now, Yes, sir. Correct, sir. So ठीक है बेटा, matching. Exactly same, sir. Very good beta, Right. very good. Very good. So everybody okay up to here? Yes, sir. Yes sir. ओके अब बेटा मुझे ये बताओ कि इस केस में वर्टेक्स अंदर बनेगा या बाहर बनेगा? बाहर बनेगा. बाहर बनेगा सर. B की सर साइड. 96 से बाहर बनेगा सर, बी की साइड. On the B side. Very good बेटा, very good. You have understood. ये किसी का नेट बहुत ही स्लो है बेटा. Anyway, हाँ so सर, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है सर कि अपना खराब हो गया क्या. no. Yours is all right beta. So you are perfectly right beta. The vertex will be outside because one of the angles is obtuse angle, that is angle P, and it will be outside in the direction or on the side of angle P only. So let's see ahead now. we need to figure out as to where does the vertex lie. Now, as one angle is obtuse, the vertex lies outside the track and towards the side of the obtuse angle. So vertex shall lie somewhere on this part of the track. So we can mark a suitable point V denoting the vertex. We can draw its meridian from P the pole, and that meridian shall make an angle of 90 degrees with the GC track at the vertex. So बेटा हमें जैसे ही ये पता चला that vertex is outside and it is on the side of B, हमने इस ट्रैक पे बाहर कहीं पर भी wherever you want to take it एक पॉइंट ले लिया और उसे नाम दे दिया V, representing that this is the vertex. And we now know that this angle is always 90 degrees. At the vertex, great circle track is east-west, and the meridian which runs north-south, they intersect at right angles. So this is a 90-degree angle. So is everything clear beta? Any doubt up to here? No sir. No, sir. Very good. So we have to make this triangle Papa Alpha Victor. So पाव भाजी का पाव बन गया यहाँ पे PAV. So let's see now कि इस PAV triangle में हम आगे कैसे proceed करेंगे. Now, to solve for the coordinates of the vertex,
we can take any of the right angle triangle. There are two right angle triangles formed here. One is PVB, other is PVA. So we can always see which one is easier to solve. In this case, A can be directly used if we use PVA. So for this reason, just for the sake of simplicity, we have chosen the triangle PVA. So we make a cartwheel for the right triangle PVA. सो अब बेटा हमने ये ट्रायंगल कंसिडर की है विच इज शेडेड पापा अल्फा विक्टर. सो आपके माइंड में ये भी डाउट आ सकता है सर क्या मैं PBV ट्रायंगल भी ले सकता हूँ पापा ब्रेवो विक्टर. यू कैन टेक दैट, पर उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. कैन एनीवन टेल मी बेटा? एंगल बी सर जो होगा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. यस, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बेटा, उसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी. राइट. सो अगर आप पापा ब्रेवो विक्टर ट्रायंगल लेते हो, ले सकते हो आप, देयर इज नो प्रॉब्लम, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा. बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रेवो एंगल जो आप यूज करोगे उस ट्रायंगल में it will be 180 minus the Bravo angle which you have calculated, क्योंकि वो Bravo एंगल इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा. तो आपको 180 माइनस एंगल बी करके अपना नया एंगल बी PBV ट्रायंगल की कैलकुलेशन में यूज करना होगा. दैट ऑल्सो कैन बी डन, उससे भी आपका आंसर सेम आएगा. सो हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए पापा अल्फा विक्टर ट्रायंगल ले ली है और इसका हम अभी नेपियर रूल अप्लाई करने वाले हैं. सो वी विल मेक द कार्टव्हील, द सर्कुलर डायग्राम एंड अप्लाई द नेपियर रूल. We have shaded the triangle that we are talking about. So you can see we are talking about this triangle now. So, and this will be the angle P as far as PVA is concerned. So we have the cartwheel coming up, divided into parts. Now 90-degree angle is V, so that comes up here. Then we have in the three bigger ones, we have the complements. So we already put 90 minus out there. And now we go clockwise from V. So from V, the first part is AV, which comes in here clockwise from here like this. The next part is angle A, so 90 minus A. The next part is side PA, 90 minus PA. Then it's angle P. So angle P obviously is this angle from meridian of A to meridian of V. And then we have lastly the side PV. So beta, okay up to filling up of the diagram? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब बेटा इस डायग्राम में आप मुझे बताओ, रिक्वायरमेंट है कि हमें 90 डिग्री वाले पार्ट को छोड़ के कोई भी और दो चीज़ें पता होनी चाहिए. सो कैन यू टेल मी विच टू थिंग्स आर नोन टू अस? सर PA पता है. PA and angle A. The PA and angle A. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सो हमें जो चीज़ें पता हैं वो है साइड PA पापा अल्फा विच इज़ द कोलैट ऑफ A, ये हमें पहले से ही पता थी. और दूसरी चीज़ जो हमें पता है वो है एंगल A. सो दीज टू थिंग्स आर नोन टू अस. सो विच पार्ट्स आर दीज? यू सी 90 माइनस PA इज दिस पार्ट, this is known to us, and angle A is this part, this is also known to us. अब हम इन्हीं दोनों पार्ट के साथ नेपियर रूल को अप्लाई करेंगे. So this way we complete the cartwheel for the Napier's rule for the right triangle PVA. Now in the right triangle, let us identify the parts that are known to us. We know PA and we know angle A in the PVA triangle. So we mark these two parts in the cartwheel here. So we have PA known and we have angle A known. So these two values are known to us. Now we identify what we need to calculate. Now to get the latitude of V, we need to calculate PV. So PV would be one element that needs to be calculated. सो बेटा एक चीज़ जो हम फाइंड करेंगे वो होगा पापा विक्टर. जैसे ही ये पापा विक्टर साइड हमें मिलती है,
this will give us the colat of the vertex. जैसा अभी somebody told me before, Papa Victor will be the colat of vertex. और 90 माइनस PV करेंगे तो हमारे पास वर्टेक्स का लैटिट्यूड आ जाएगा. अंडरस्टूड बेटा? सर इसमें हम अगर एवी पहले कैलकुलेट कर देंगे तो उससे डीलॉन मिल जाएगा हमें. तो क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? सर इसमें अगर हम पहले एवी कैलकुलेट करना चाहें तो उससे भी डीलॉन मिल जाएगा, एंगल पी मिल जाएगा हमें पूरा. तो डीलॉन नहीं बेटा, ये बात का ध्यान रखना कि जो एंगल P है वो AV के इक्वल नहीं है. ये दोनों अलग अलग हैं. इक्वल नहीं है सर, वो डीलॉन मिलेगा तो P की पोजीशन में ऐड करके V की लॉन्जिट्यूड मिल जाएगी ना. यस, दैट इज राइट बेटा. हम बेटा सेकंड आइटम जो निकालेंगे वो होगा एंगल P. ओके, अल्फा पापा विक्टर APV एंगल जो बन रहा है विच इज बेसिकली एंगल P. ये वाला जो पार्ट है बेटा ये हम निकालेंगे. एंगल P जो है इट इज द डी लॉन्ग बिटवीन अल्फा एंड विक्टर. सो वंस यू नो एंगल P, apply it to the longitude of A. Longitude of A is given to us, it is 40 degree east. हम इसे इस longitude पे अप्लाई कर देंगे और हमें वर्टेक्स का longitude मिल जाएगा. Is it clear now बेटा? Yes sir, thank you. Okay, so let's see ahead. To get the longitude of V, we need to calculate this angle P from meridian of A to meridian of V. So that is angle P. This part also needs to be calculated. So if you see for PV, these known parts are opposite parts. So we apply sine of the middle part is equal to product of the cosines. We put the values and we get the value of PV as 59.385 degrees, which is colat of V, and therefore latitude of V is 90 minus PV equals to 30 degrees 36.9 minutes north. Now we apply the Napier's rule for these three parts, in which this 90 minus PA is the middle part and the other two are the adjacent ones. So sine of mid part is equal to product of the tangent of the adjacent ones. We put the values that are known to us and we get the value of P as 72 degrees 39.8 minutes. In the diagram we can see this is the D long from A to B, and the diagram clearly shows that the D long is easterly from A to V. Now therefore longitude of V would be longitude of A, which is 40 degrees east, and D long is east, so we add them and we get the longitude of the vertex as 112 degrees 39.6 minutes. So the coordinates of the vertex are 30 degrees 36.9 minutes north, 112 degrees 39.6 minutes east. Having calculated the coordinates of the vertex. Okay बेटा, so आप इसका एक screenshot ले लो. You can do this as your homework. You can find the position of the vertex by applying the Napier's rule. Just take a screenshot, save it with you, and match your answers once you have done it. Okay, sir. Okay. So today we have learned, beta, what is the vertex? How do we find the position of the vertex? What are Napier's rule? How do we apply them? ये चीज़ें आज हमने सीखी हैं. So अब बेटा आपका जो वीकेंड के लिए होमवर्क है, वीकेंड के लिए जो आपका होमवर्क है, आपके पास प्रैक्टिकल नेविगेशन की बुक है बेटा, कैप्टन सुब्रमण्यम प्रैक्टिकल नेविगेशन. यस सर. यस सर. उसमें आपको ग्रेट सर्कल सेलिंग का एक चैप्टर मिलेगा. I think about chapter, it's toward the end of the book. So great circle chapter 22 है सर, chapter 22. Very good. So उस chapter 22 में बेटा जो शुरू के 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में पीछे दिए गए हैं,
उसमें उन्होंने आपको वर्टेक्स की पोजीशन निकालने के लिए बोला है। तो आपने ओवर द वीकेंड इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और वर्टेक्स की पोजीशन निकालने में परफेक्ट बन जाना है। ठीक है सर। ओके बेटा, ऑल राइट। यस ओके सर। ओके देन सैटरडे भी क्लास है, वीकेंड नहीं है। सैटरडे सर क्लास है बेटा। ओके ओके बेटा, ठीक है। सो सर ये जो आगे के क्वेश्चन है सर 7, 8, 9, 10 वो वाले। बेटा वो इंटरमीडिएट पोजीशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। यू डू अप टू द कैलकुलेशन ऑफ वर्टेक्स। उसके आगे वाले ओके इंटरमीडिएट पोजीशन कैसे ढूंढनी है आई विल एक्सप्लेन टू यू नेक्स्ट लेक्चर में, उनको करेंगे। ठीक है सर। सर जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 था, यस दैट कैन बी डन नाउ बेटा। अब आप नेपियर रूल फेमिलियर हो गए हो, सो ट्राई आउट दैट क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। sir, So if can't you we get, solve that using the cosine formula? you Because in can that do it. total distance is given A to B to C, and AB we can calculate by DLAT, distance from A to B. You can beta, you can solve it by cosine formula also. Any question which can be solved using Napier rule can be solved using cosine formula also. Napier rule is basically a shortcut version of the cosine formula only. तो उसका थोड़ा हिंट दे दोगे सर, बाय कोसाइन फार्मूला हाउ कैन वी सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज़ आंसर Okay. नहीं आ रहा था। Okay. उसमें व्हाट आई हैव ट्राइड इज बिकॉज़ A to B एंड देन फाइनल पोर्ट C, टोटल डिस्टेंस इज गिवन 5400। No problem बेटा, hold on. अभी के लिए आप उसे नेपियर रूल के साथ सॉल्व कर लो. Okay, try solving it with Napier rule. Next class I'll tell you how it can be done with cosine formula. Let me see it. I'm not sure about what is given. Let me see it and we will discuss. सर फॉर नेपियर रूल उसमें 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए ना, तो वो 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा? 90 डिग्री एंगल और दी 90 डिग्री साइड। बेटा मैंने तुम्हें सोल्यूशन भेजा है। नहीं सर नहीं। उसका सोल्यूशन भेजा है बेटा। नेगेटिव। यस सर, भेजा है सर भेजा आपने, सॉल्यूशन भेजा हुआ है सारा। सो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे से चेक करो, आपको हिंट क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व मिल जाएगा बेटा। सर हिमालय का है ना वो सर? ओके सर, ओके। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट टाइम श्योर। लगता है। हाँ, से अगेन। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। ओके बेटा, ठीक है बेटा। Solution. सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास देन। बाय बाय टिल देन। ओके सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स।